अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर शो वंस अगेन। हमेशा की तरह आसिफ, मुदस्सिर मिर्ज़ा और साइम आपके सामने हाजिर हैं। आज की इस एपिसोड का जो मेन मकसद है, फ्रॉम टुमारो वी आर स्टार्टिंग दी पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड सीरीज। उसको थोड़ा सा प्रीव्यू कर लेंगे विद अ बिग पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड कप। और बात कर लेंगे कि हमारा जो स्क्वाड रिलीज हुआ लास्ट टाइम, जैसे कि आपको पता होगा कि हमने स्क्वाड के ऊपर डिस्कशन की थी। तो नाउ दैट द स्क्वाड फॉर एटलीस्ट द सीरीज इज आउट, तो उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे कि व्हाट डू वी मेक आउट ऑफ द स्क्वाड। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। मैं अपने पैनलिस्ट से पूछूंगा, पाकिस्तान का स्क्वाड जो है 18 मेंबर स्क्वाड फॉर द आयरलैंड सीरीज एंड द टेस्ट एंड द सॉरी द इंग्लैंड सीरीज, दैट्स आउट। क्या कहेंगे इस स्क्वाड के बारे में? मोर और लेस वही स्क्वाड है ऑफ अबाउट 17-18 पीपल दैट वी हैड एक्चुअली आल्सो सेड, बट देयर हैव बीन अ कपल ऑफ सरप्राइजेस। हसन अली इज बैक आउट ऑफ नोवेयर, एंड देन आगा सलमान, उसको हमने इनिशियली अपने स्क्वाड में की थी उसकी बात, लेकिन फिर he was sort of out of favor. आगा सलमान has made a comeback as well. बिग पिक्चर कैसा देखेंगे आप? आसिफ, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। What do you हाँ make of the जी। squad? Uh, Assalamu alaikum. Yeah, I mean, look, if you ask me, and I said this last time as well, in an ideal world, you would have had our final team set up, selected, and come in and be ready to play. I would have said one match versus Ireland and maybe 3 matches versus England, but have your World Cup squad ready to go and go from there. So the PCB, as always, likes to be different, and the fact um, that they have chosen a team just for these matches and saying we reserve the right to change it before the World Cup is a huge, huge blunder, I feel. Let me start with the positive. The positive is that we came up with our best 11 in the last episode, and I think that is intact, and so there are some selection, very confusing selections that are there. But if you really think about it, most of those are along the periphery, the reserves. So yes, it's something to debate, but at the end of the day, is it going to affect our playing 11? One hopes not. Having said that, the two things I will say mainly are, one, the approach is horrible, because what it does is it feeds this insecurity into the players. You are not necessarily there for the World Cup. You are there on a trial basis. Every single thing you do is under the microscope. And if you do great, fine. If you don't, you're out of the team. That's not the mindset you need to have when going into the World Cup. And so players are going to be playing for themselves rather than playing for the team, which is what you just do not want. A few matches less than a month removed from the World Cup, you don't want that at all. Now, Baki selection, you guys can say, of course, look, Al Salman was someone we liked. But how do you have someone who's just totally out of favor and then come right back in? Of course, all of that pales into comparison. Hassan Ali, the question is this: on what basis? On what basis at all has he been selected? He did not do anything recently. His PSL was grossly underwhelming. The clear and obvious logic is that he is a favorite of Babar and some of the members of the team. He has a good, positive demeanor. Everybody likes him. He's a joker. So I say, all right, fine. Bring him along as a mascot. He doesn't have to be there as a player. Let him be there. If everyone feels happy with him there, let him go along and raise their spirits and, dive in some water when there's a rain delay or whatever. Let everyone get happy. But he is clearly taking the place of other players who have put in the work, your Zamans, your Wasim Juniors, and others like that. So again, hopefully these are peripheral players who won't really feature in the top 11, but it does. I just think it undermines the entire selection process. And it really, if I were a Pakistan peripheral player who's been working my tail off for the last few years, seeing this would deflate me completely. It's very sad and discouraging. And it just seems like the PCB, while above, overall they got it right, I think they always find new ways to just mess things up. Again, you guys can go into more detail about the individual selections and omissions, but that's the bottom line: is you are not instilling confidence into your players, which is the worst possible mindset you can have going into a World Cup. हाँ, नहीं, मैं आपकी एग्री को करूंगा बात को। अगर आप इंडिया की भी सिलेक्शन देखें, अब उन्होंने कर दी है। अब आगे जो होता है उनके आईपीएल में डजंट हाँ, मैटर। उसके बाद से अब बिल्कुल। जिस तरह चाहल वगैरह की पिटाई भी हो रही है, बट एटलीस्ट ही हैज द सिक्योरिटी कि भाई मेरी स्क्वाड में कहीं जगह नहीं जा रही। तो वो जो प्रेफरल जो हमारे द लाइक्स ऑफ उस्मान खान एंड आजम खान एंड अदर्स, उन पे बड़ा प्रेशर पड़ेगा।
इसी को आगे लेके चलते हैं, लेट्स बी अ लिटिल बिट मोर स्पेसिफिक। हमने जो couple of changes जो कि हमें नजर आए हैं, so I think all three of us were agreeing कि at least 15 member squad में हमारे पास एक all pace all-rounder type एक player होना चाहिए, someone like आमिर जमाल या someone like वसीम जूनियर। तो वो हमें नजर नहीं आ रहा इस सीरीज। तो इससे यही लगता है कि जो हमारे पास एक ऑप्शन है ऑफ अ पेस ऑलराउंडर, उसको पाकिस्तान जो है is probably not going to go that route. I don't think they'll just play four pacers अगर pitch conditions हुई भी conducive. The fact that Pakistan likes to have थोड़ी सी depth in batting as well. तो अगर वो for example शाहीन, नसीम, आमिर और रऊफ को जिस तरह खिलाते हैं, तो वो बैटिंग हमारी थोड़ी सी वीक हो जाएगी। तो दे नॉट गोना इवन गो दैट राउट। उसके बारे में क्या कहेंगे, द लैक ऑफ अ फोर्थ पेस ऑलराउंडर? मिर्जा, आप इस पे बात करना चाहो या और कंटिन्यू यार करना चाहो? ये सेंसलेस है, सॉरी टू से। ये कोई कोई मेथड तो होना चाहिए ना सिलेक्शन का। आप तुम लोग याद करो, आगा ओरिजिनल न्यूजीलैंड सीरीज से पहले आगा वाज इन लाइक इन आवर पिक्स। उस्मान हम्म, खान बीच में आ गया, ठीक है। और उस्मान और आगा दोनों ना टॉप मैक्सिमम 4 के प्लेयर हैं, वो छठे सातवें के पिंच हिटर नहीं है। उस्मान को डाला, फिर आगा को नहीं पिक किया। अब आगा को पिक किया है, वो आपके फौज है ऊपर टॉप छः, आपके अब 6 खिलाड़ी हैं, फखर, साइम, बाबर, रिजवान, आगा, उस्मान खान भरे जा रहे हैं। बंदे चाहिए लोअर मिडिल ऑर्डर के, और खिलाए जाओ ओपनर 5-6। स्टूपिड हरकत है बिल्कुल ही। हसन अली की कोई कोई तुक ही नहीं है। आइडिया ठीक है, वो मैं सुन रहा था कहीं लोग अनफिट हो जाते हैं, रऊफ अनफिट हो जाता है, शाहीन भी पैची है भाई, तो उसके लिए आमिर खिलाए ना। हम्म। फिर आमिर के होते हुए हसन किस खुशी में आ रहा या है ये? वसीम जूनियर खिला लें, आमिर जमाल नहीं, खिला लें, वो हुआ इसका जमान कि खान खिला वसीम लें। वसीम जो था हमारा थर्ड या फोर्थ पेसर था ना, हम्म, वसीम की जगह पे आया आमिर। चलो वो आई वाज ठीक है, शौक करने लोग पूरा। फिर अब हसन अली की तो सेंसलेस है ना आमिर के ऊपर। इसका मतलब है यू यू वांट टू, आप सही कह रहे हो, टीम फाइनल नहीं करने का मकसद ही यही है कि ये एंड तक इसमें पंगे करते रहेंगे, विच इज रॉन्ग। टीम शुड हैव बीन फाइनलाइज। 17 का कर देते यार, फिर ऊपर नीचे हो जाते हैं। उसामा और अब्रार में से वी वांटेड अब्रार इन, चलो वो फिर भी हो गया। I was right. I was right. We said या that यू last time. राइट। Yes. हाँ, हमें कंसर्न था सबको, चाह हम सारे यही रहते, बट हम तीनों को या एटलीस्ट मुझे और मिर्जा को कंसर्न था कि यार ये हाँ, हम हटा देंगे इसको, या तो दोनों को खिलाएंगे या अबरार को काट देंगे। क्या सो मगर उन्होंने ये कि अच्छा किया उसामा एटलीस्ट। उसामा को ड्रॉप करके हसन को आ गया, तो आई डोंट नो वी गेन एनीथिंग। मगर आई एग्री कि 4 पेसर्स शाहीन, नसीम, रऊफ, आमिर के होते हुए हसन हसन से कुछ फायदा नहीं होगा। आमिर जमाल को ऐड करना था, क्योंकि ही इज द ओनली ऑलराउंडर वी हैव। अब वो खेलता नहीं खेलता वो अलग बात है, मगर स्क्वाड को बैलेंस तो करे ना, कोई 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 थॉट प्रोसेस तो होना चाहिए ना। राइट। अच्छा, Yeah. अब Yeah. गिवन कि इन्होंने आई थिंक 25 तक इज द डेडलाइन जब तक इन्होंने करनी है अनाउंस टीम ऑफ 15। तो इसका जिसका मतलब है कि ये तीन हमारे जो आयरलैंड के साथ मैचेस हैं वो, एंड मे बी वन और एट मोस्ट टू मैचेस अगेंस्ट इंग्लैंड, उसके बाद उनको करनी पड़ेगी। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको थोड़े से डाउटफुल लग रहे हैं, सॉर्ट ऑफ ऑन द बॉर्डर लाइन। And if they're on the borderline, should they be tried out? Should this be considered an audition for them? So, for example, क्या कहें, मेरी नज़र में, for example, Niazi, you're not sure कि 15 will make it or not. Agha, again, because वो अभी उसने एंट्री की है, I'm not sure कि वो आएगा नहीं आएगा. Hassan Ali, again, नॉट श्योर कि उसकी जगह बनेगी कि नहीं बनेगी. अब्बास अगेन इज सॉर्ट ऑफ फ्रिंज प्लेयर, बिकॉज अगर रऊफ ठीक हो जाता है तो अब्बास, वी नॉट श्योर अब्बास जो है वो आएगा नहीं आएगा. सो ये 4-5 प्लेयर्स हैं. वी हैवंट सीन क्या कहते हैं आजम खान, बिकॉज आजम खान इज कमिंग आउट ऑफ एन इंजरी. क्या फॉर्म है उसकी, उसको कंटिन्यू करते हैं या दे गो फॉर समवन लाइक आगा मे बी, और न्याजी टू रिप्लेस हिम. तो ये जो प्लेयर्स हैं, would you like to see them being featured more in the Ireland series and the first couple of matches against England, या अब आपका ख्याल है कि वो टाइम आ गया है कि भी अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ जाना चाहिए और उनको थोड़ा मोमेंटम देना चाहिए और हर बंदे को एक रोल क्लैरिटी मिलनी चाहिए? क्या कहेंगे इस बारे में आसिफ Yeah, आप? I think that
there's what we believe, and then there's what the PCB is actually thinking. The fact that they've taken this approach means that they want to try people out. So in our dream world, we can say, my thought is go with your best 11, maybe rotate the bowlers so the fast bowlers get some rest. But clearly that's not what the PCB is thinking. So I'm going to actually say whatever the PCB has gone with, let's take advantage of that, since we are where we are. If you have lemons, make lemonade, right? So our biggest issue, like we said, is over 7 to 15. I actually disagree with Mudassir a little bit. I think Agha Salman can come lower down. He's someone who can score from the word go. So I would say fill up the batting lineup with your Agha Salmans, Niazi, Usman, Azam. We have to see his fitness. I love Azam Khan, but if he's not fit, he can't play, and he should not be taking up a space. Hassan Ali Chalo Khair, but fill up your middle order batting. This is an opportunity to determine your 7 to 15 overs. Who are the guys there? So look, my thought would have been the Ireland series, play your best 11 in match 1, win that comfortably, and then start experimenting. Ab ye hai ki Amir cannot get there because of his visa issues. So that's okay. Play Haris for that first match, but get your best 11 and then start experimenting with the या batting. अगर हारिस नहीं है तो आप अब्बास को भी करवा सकते हो, राइट? हारिस का मैं नहीं पता कितनी इंजरी की क्या नहीं है. Issue ये है कि our players, even our senior most players, are so insecure that they will not sit. Just that's what Hamisha कहता है. Rizwan will not sit because he's worried कि अगर these guys succeed, what am I going to do? Babar could rest, but he's not going to. So that's the issue for me. Even I'm not sure if he has a place in the board anymore. Inzamam al-Haq ka bayan tha bhi dusre din ke, if Saim does not succeed in the Ireland matches, then take him out of the opening slot. How can you do that right on the eve of the World Cup? You've got an explosive option, and if he fails, your old buddy Rizwan is still there. So this is for fine tuning, right? But it's just Ireland. It doesn't matter. Pehle match mein, play your best 11. Uske baad, stick all these guys in. And who cares what happens with the outcome? See who is settled. The other tricky thing is you're judging these guys on Ireland pitches and England pitches, which are so different from what we're going to see in the US and the Caribbean. That isn't really a fair assessment. But you know what? The PCB has decided. And that's why in my mind, I would not use this as a grounds for assessing about the World Cup. But the PCB has made that decision. So you're stuck with where you are. अच्छा, तो इसमें फिर बना लेते हैं. चलें, आप जिस तरह कह रहे हैं कि कल के मैच में या मैच 2 में अगेंस्ट आयरलैंड, बाबर और साइम को तो आई थिंक they'll open because they want to give them a fair run. बाबर आई एग्री कि उसको बिठा भी सकते हैं, बट अगेन अगर आपने एक ओपनिंग को ट्राई करना है कि यार ओपनिंग को और एस्टैब्लिश करने के लिए, तो चलो बाबर साइम आपके हो गए. अब बात आ जाती है 1 डाउन पे. रिजवान, अगेन इफ वी प्ले रिजवान, तो फिर आप उस्मान या फखर में से किसी एक को बिठाना पड़ेगा, राइट? सो अगर आप रिजवान को बिठाते हो तो फिर आपके पास, मैं तुम लोगों को कब से कह रहा हूँ उस्मान खान की जगह नहीं है इस टीम में, कोई सुन नहीं रहा है. प्रैक्टिकली ही बी नहीं है जगह, मैं बता, जब तक मसला ये रिजवान जब खेलेगा ना इस टीम में, ही इज ब्लॉकिंग 2 प्लेयर्स. अब ये यू कैन फिगर इट आउट. मैं क्या कह रहा हूँ, वो 1 डाउन भी ब्लॉक करता है और पीछे एक और स्पॉट ब्लॉक. चले आप मुदस्सिर, आप अपनी बनाओ कल की, अगले मैच की. तो साइम एंड बाबर टू ओपन. 1 डाउन किसे भेजोगे आप? यार साइम, बाबर, उस्मान और रिजवान में यू हैव टू पिक वन. बोर्ड पिक करेगा रिजवान, आई वुड प्ले उस्मान. 4th पे फकर. 5th 6th में चाचा तो होगा. आई नीड टू सी कि आजम कितना फिट है, और आजम नहीं है तो न्याजी, और फिर शादाब को फ्लोटर है. फिर बाकी टीम तो हमें पता ही है, पीछे शादाब, इमाद. तो फिर आगा सलमान को नहीं आप ट्राई करोगे? फिर बेसिकली आगा सलमान को नहीं ट्राई करोगे? आगा सलमान नहीं हो रहा उस्मान के साथ, बिकॉज एक बार बताऊं, हमारी टीम की जो वीक लिंक है ना, वो पावर हिटिंग है ही नहीं कोई टीम में पावर हिटर. सिर्फ फखर है, वो भी शुगर है कि नंबर 4 पे से थोड़ी साइम है, फिर फखर है, पीछे आजम प्रॉमिसिंग है. आई होप ही क्लिक्स. और फिर थोड़ा बहुत चाचा आजकल डाउन है. अगर चाचा ने 1-2 सीरीजें खराब खेली तो ये भी बाहर हो सकते हैं. तो अच्छा, आजम का आई एग्री विद आसिफ, आसिफ सेइंग कि यार इसको मैट्रिक नहीं लेना चाहिए, बट एट द सेम टाइम गिवन के पास में भी उसकी कोई इंटरनेशनल मैचेस में अभी तक उस तरह परफॉर्मेंस नहीं आई. इज कमिंग आउट ऑफ एन इंजरी. हमें नहीं पता उसकी क्या फॉर्म है, क्या फिटनेस है. डू यू थिंक उसकी पोजीशन कुड बी इन डाउट, और आगा सलमान कुड बी सॉर्ट ऑफ एज अ बैकअप, और न्याजी कुड बी एज अ बैकअप फॉर हिम? आगा सलमान इज नॉट अ पावर हिटर. आगा सलमान को आप ट्राई कर लो 5th 6th पे, मगर 5th 6th जो स्पॉट है ना, उस तुम अगर पूरी दुनिया में देखो ना, वो इट्स अ डिफरेंट बीस्ट.
मैं तो कहता हूँ कि आफरीदी, रज़ाक, उमर अकमल, अब तो आप हम इन्हीं को नहीं रिप्लेस कर सके अभी तक। कितने 15 साल हो चुके हैं हम लोग को यार। Yeah, सिक्स like आप भूल रहे हो, Agha Salman can hit. He improvises. He can hit quite a bit. I agree with Simon. I would play. Look, Agha should play every single match. You know, to establish fitness and see and give him some confidence because, like you said, we've not had international success. And if he fails and or his fitness is not there, I would choose Agha Salman over Niazi because of his success at the international level. You know. ट्राइकल, मगर और फिर ये है कि आगा के साथ आपको स्पिन ऑप्शन भी मिल जाता है। अब इंडिया 4 स्पिनर्स के साथ जा रहा है। Fielding भी, I've never seen him drop a catch. यकीन करो, he's got फील्डिंग very अच्छी good है। hands. he's a good player, मगर वो टीम वो खैर He's not in मसला my वो है top कि 11. I agree with Mudassir. He's not in my top 11 at all. You know, अब वो वीकेंड आप रिजवान को ड्रॉप करो तो आगा भी आ जाएगा और उस्मान भी आ जाएगा। बात वही है ना, आगा को अगर आप अभी पीएसएल में भी देखो जो इस्लामाबाद की तरफ से खेला है, ही वाज कमिंग 1 डाउन 2 डाउन। yeah. तो वी हैव, और उसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी टॉप 4 तो हमारे मोर और He लेस can सेटल्ड come है, later राइट? as well. I think he's adaptable. देखो He's very नंबर adaptable. 5 फिर भी ट्रिकी है। वी कैन ट्राई हिम। आई मीन आई गेस आई एग्री कि न्यादी से पहले वी कैन ट्राई आगा एट 5, मगर ये कि फिर आई थिंक टीम में है अभी क्वेश्चन मार्क नंबर 5 6 7 पे ना, सेटल नहीं है टीम। अच्छा, बॉलर्स में किन्हें आप रोटेट करोगे? हमें शाहीन, नसीम, यू हैव आमिर। कम फर्स्ट मैच में तो आमिर नहीं खेल सकेगा, एंड देन यू हैव रऊफ एंड अब्बास। तो क्या इन्हीं को आप रोटेट करते रहोगे ताकि इंजरी कंसर्न ना हो, या व्हाट यू गोना प्ले? आप तो मेरा ख्याल है 3 ही प्ले पेसर्स के साथ जाएंगे ये लोग। क्या कहोगे आप इन टर्म्स ऑफ रोटेशन? I आमिर also को think एक एक तो match फोर्थ में, रोटेशन हो गई ना जी। well, at least there should be one match where you have your front line three, Naseem, Shaheen, and Amir, right? ये है कि उसके बाद you rotate them out and rest them because it's just not worth the injury risk. We know what they're capable of. In contrast to you guys, I'm actually very comfortable with only 3 pacers. You know, आप सोचो, if you have 4 guys in 20 overs में से, you're saying 16 overs will be pace. I think 8 overs between, we have so many different options, spin options, especially if you have Agha in there. But, you know, you've got Abrar, you've got Shadab, you've got Chacha, you've got Imad Hussein, you've got Saim. There's so many different options you can play with. So I think 12 overs of pace is great. And then mix and match based on what you've got. I think 4 pacers is a little overkill. Obviously, you look for a fast bowling all-rounder. Again, I reiterate my point. Just for the मैं sake इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था कि अब जिस तरह न्यूयॉर्क में जो मैच है अगेंस्ट इंडिया, तो इट्स अ ये ड्रॉप वाला इन मैच पिच है। जो एडलेड से आई है, राइट? ड्रॉप इन पिच है। इट्स अगेन वी डोंट नो, बट हाइपोथेटिकली इट कुड बी बाउंसी, इट कुड बी पेस कंड्यूसिव, एंड इंडिया वी नो प्ले स्पिन वेल। तो वही चीज ना हमारे साथ हो जाए कि जी जिस तरह नवाज वाज बॉलिंग द लास्ट ओवर, हमारी वो चीज उसके आई कंप्लीटली एग्री। वो कभी कभार कंडीशन ऐसी हो जाती हैं ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इवन इंग्लैंड में, कि यू विश के यार कोई और तो 2 ओवर करा देता। तो मैं ही तो आमिर जमाल को आप तब खिलाएंगे व्हेन ही इज नॉट गारंटी, क्योंकि 4 ओवर में ही कैन बी लायबिलिटी टू। तो 1 ओवर का बॉलर है वो, मतलब जब आपको लग 2 रहा ओवर करवा लो यार। ये वैसे ही रिश्ता वो ऑस्ट्रेलिया में वो आमिर जमाल इज अ बेटर बॉलर, क्या नाम है उसका, मिच मार्श भी यही करता है। जब पैट कमिंस देखता है पिच में बाउंस है, वो विकेट भी ले जाता है। ओवर्स नंबर 7 to 9 जो होते हैं ना, वैसे जैसे ही पावर प्ले खत्म होता है, थोड़ा सा टीम जो है वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाती है। अगर आपने स्लिप इन करना है तो उस टाइम भी कर सकते हो आप उसको। ओवर नंबर 7 हो गया या 7 to 9 के दरमियान कपल ऑफ ओवर्स निकाल दो। ही गिव्स यू अ लॉट इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, जो एक्सप्लोसिवनेस है उसकी, जो हमने देखा है। बट अगेन अब उसको शामिल ही नहीं किया। सो इस स्टेज के ऊपर क्या बात कर रहे हैं, अब क्या हम कर सकते हैं? ऑल्दो हाइपोथेटिकली वी हैव सीन के पास्ट के अंदर आउट ऑफ नोवेयर हो जाता है सिलेक्शन, but for that to happen, some of the other players need to fail spectacularly in the series. If we lose to Ireland and things go poorly, you never know. They'll put they'll bring Amr Jamal and they'll bring in Omar Akmal, Shahid Afridi from retirement. You know they'll panic. So, नहीं, this is a very extremely poor selection. एक यंग बंदा है जो ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म कर रहा है वर्ल्ड स्टेज पे। बूस्ट न्यूजीलैंड में सही खिलाया, वो पिट गया, कोई बात नहीं। आपके मुल्क में कोई बैकअप ही नहीं है, उसको रखो यार स्क्वाड में, मत खिलाओ सारे ओवर मत दो, गिव हिम कॉन्फिडेंस। और क्या आपके पास? वो राणा साहब यार, और पीएसएल में इतनी बुरी भी नहीं थी उसको। इफ यू रिमेंबर, उसने एक लास्ट ओवर के अंदर डिफेंड भी किया था अगेंस्ट कराची किंग्स के अगेंस्ट, वो लास्ट बॉल तक चली गई थी, तो ही वाज प्रीटी डिसेंट। और जो उसने एक his batting was far better than his bowling. एग्जैक्टली, नहीं वो तो है। वो तो खैर फिर आपके पास वसीम जूनियर में भी यही है कि उसकी बॉलिंग में थोड़ी सी पिट जाता है वो।
वसीम जूनियर खैर उसकी बैटिंग भी इतनी अच्छी नहीं रही, सो अपार्ट फ्रॉम जो उसने शाहीन को मार दिया था आखिरी बॉल पे। वसीम हमेशा से मेरे लिए वही बॉलर था, वही फोर्थ, जिस पे 3 ओवर हो गए, बॉल आखिरी 1-2 ओवर कराने हैं तो वसीम को दे दो। He cannot do Wasim as a 3 front, वो पिटेगा टीम में। He's a good supporting role, yeah. अच्छा चलें एक फाइनल बात कर लेंगे। जो ऑन गोइंग कंसर्न हमें नजर आ रही है, दो कंसर्न्स हमने पहले कुछ एपिसोड्स में भी बात की है। एक तो ये कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हमारे पास उस तरह हम इस्टेब्लिश नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली। देयर वाज अ टाइम कि हम जमान खान को बूम कर रहे थे उस रोल के अंदर, बट जमान खान इज नॉट इन द यू नो इज नो वे टू बी सीन राइट नाउ। तो फिर बाकी हमारे पास एक नसीम ही रह जाता है, टू सर्टन एक्सटेंट आमिर, बट अगेन आमिर इज अगेन मोर ऑफ अ पावर प्ले बॉलर। दूसरी हमारी कंसर्न रह जाती है मिडिल ओवर्स की, और ये हम बहुत बात कर चुके हैं कि ओवर्स नंबर 7 to 15 में हमारी सेकंड वर्स्ट स्ट्राइक रेट है इन द टॉप 10 टेस्ट प्लेइंग नेशंस। तो इन दो कंसर्न्स को किस तरह हम एड्रेस करें इन दिस सीरीज एंड द इंग्लैंड सीरीज? क्या आप थोड़ी बहुत एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहोगे? किन बॉलर्स को आप चाहोगे कि यार इनसे डेथ ओवर्स करवा के देख लें, ताकि अगर हमें क्लैरिटी मिल जाए कि हमारे पास हुआ डेथ बॉलर्स एंड मिडिल ओवर्स के अंदर? फॉर एग्जांपल मेरे जहन में था कि शादाब खान हैज डन वेल इन द मिडिल ओवर जब जब उसको मौका मिला है इस सीरीज में भी, एंड स्पिन के अगेंस्ट उसका बड़ा अच्छा स्ट्राइक रेट है, आई थिंक बाकी सबसे बेहतर है। एंड वी नो कि मिडिल ओवर्स में टिपिकली स्पिन बॉलर्स ऑपरेट कर रहे होते हैं। सो मेरे लिए, फॉर मी, लाइक आई डोंट लाइक पुटिंग पीपल इन साइलोस के यार ये नंबर 5 है, नंबर 6 है। आई लुक एट मोर एंट्री पॉइंट्स। सो मेरे लिए डिपेंडिंग ऑन द एंट्री पॉइंट, अगर विकेटें नहीं गिरी हुई, यू कैन सॉर्ट ऑफ बम्प अप शादाब खान टू प्ले द स्पिन ओवर्स, क्योंकि हमें पता है कि चाचा फॉर एग्जांपल वर्ल्ड कप के फाइनल में भी हमने देखा था एक पूरा मेडन उसने खेल दिया था। एग्जैक्टली। सो आपके ज़हन में इनकी क्या सॉल्यूशंस हैं, और क्या आप सजेस्ट करोगे इन दिस सीरीज एंड द सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड के मिडिल ओवर्स की जो कंसर्न है बैटिंग की और डेथ बॉलिंग, इसको किस तरह हम एड्रेस करें, और क्या क्या एक्सपेरिमेंटेशन की जा सकती यार जो डेथ बॉलिंग है ना, तो नसीम अच्छी कर रहा था इंजरी से पहले, ठीक है, तो वो देखना है कि वो जरूरी है मेरे ख्याल से आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज में कि नसीम कैन गो बैक टू हिज फॉर्म। शाहीन तो मुझे नहीं याद, वो कभी कभार अच्छी करता है। रऊफ एक जमाने में बहुत अच्छी कर रहा था, मगर वो देखते हैं वो कितना। आमिर इज नॉट बैड, वो थोड़ा अकल से करा लेता है बॉल। अभी भी उस दिन पिटा, मगर लास्ट ओवर में उसने अच्छी बॉल कराई है ना, कितने वो है? मैच जीता है पाकिस्तान। हाँ, वो दो रन आउट्स हो गए थे न्यूजीलैंड के। So I think you have options. I think between Naseem, Amir, and depending on Rauf and Shaheen की फॉर्म की दिन होता है उन दोनों का, जो अच्छा लग रहा है, they can do 17-16 too. और जो मिडिल ऑर्डर है, एग्री विद यू, शादाब इज अ गुड फ्लोटर, मगर याद रखो, मगर उस्मान अभी चला नहीं है। अगर उस्मान चल गया, या साइम अगर ओपनिंग से 20 रन से बाहर निकलता है, ही गोज टू 40-50-60, और ऊपर से उस्मान खान आगे रन करता है 1 डाउन, तो वो इम्प्रूव हो सकता है। अगर अगर बाबर रिजवान खेले जा रहे हैं तो वो नहीं इम्प्रूव होगा। आसिफ कुछ So I agree. Bowling wise, for me, it's very clear. I think Amer and Naseem should finish it. Shaheen Afridi has, I mean, he has his value mainly at the top. And I think if you close with Naseem and Amer ka ye hai ki nobody uses change of pace better than him, I think. And that's really good in the end. And he's still bowling Yorkers at good pace. So I think for me, it's very clear. Give them the last, 3 or 4 overs. And uska ye दूसरा फायदा ये है कि Shaheen Afridi will have your initial attack, but then beach man, when you have your bunches of spin overs, you can bring Shaheen Afridi at any point in the middle as a wicket taking option to break the monotony of the spinners. To if you need a spark like Wasim Akram in '92, you have that strike bowler that you can actually use as a floater based on what's going on. Yep. And batting में भी यही है, I think कि जो है I agree with Simon. Shadab should be, like you said, entry points. It's situational. It doesn't have to be written in stone. See what the situation is and adjust accordingly. But this is where, aside from that one match where you play all your best people, you just throw all of these guys in the middle and give them the confidence to say, do what you can. And you will find the PCB will, through some logic, most likely through lack of logic, find who they think are the best players to be that middle order. But that's what these matches are. It is just a chance to address not even these two things, just the 7 to 15 over, I think, is the main thing to address. And
hopefully figure out Rizwan's role. You know, I still think Rizwan should be, in my world, if Rizwan is in the 11, he should be lower down, way lower down, you know? Yeah. And you have your Usman, if he's there, and Fakhr, and all these guys, let them really express themselves and flourish without fear, because, you know, if you get out, Bichi Rizwan who can stabilize it and at least raise the floor if you're not going Yeah. to that's wrong. Rizwan का मेरे लिए जो only utility is Pakistan's 15 for 2, like 20 for 2, you know, in the first 3-4 overs. तो एक रिजवान में stability आ जाती है कि चलो. But You know, apart from that, you know, 70 for 4, right? Then you bring him in, यार right? वो जो नेदरलैंड्स के अगेंस्ट हमारे साथ हुआ था, if you remember the वर्ल्ड कप, खैर वो ओडीआई था, बट सिमिलर वो चीज कि हम वी वर टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर गया था हमारा, और फिर हमें था कि चलो रिजवान पड़ा है, रिजवान फिर हमें लेके Yeah. एंड तक उसने एक डिसेंट टोटल दे दिया था, एंड इन द एंड वी वन. बट अगेन खाली उस वजह से अगर आप रखोगे, और अगर रखते हो तो फिर आप उसकी पोजीशन थोड़ी सी फ्लोट कर दो कि यार अगर साइम और बाबर की अच्छी हो जाती है पार्टनरशिप, सो यू डोंट हैव टू हैव Kill the रिजवान बट डाउन. momentum, right? आप उसके बाद फिर यू थ्रो इन फखर, यू थ्रो इन उस्मान खान. Yeah. सो चले पीएसएल में वो देखा था जब जलमी में, तो उनका एक दो प्लेयर चले नहीं सर, वो मेनली बॉलिंग की वजह से हारे हैं. ये बाबर करता था साइम के बाद, साइम के साथ ओपन, बाकी सारे हिटर्स थे लाइन से ना. उसके बाद मोहम्मद हारिस और वो टीकेसी नहीं चला, टीकेसी चल जाता ना जलमी नहीं हारता, उनकी बाकी पूरी फ्लॉप होगी ना नीचे. मगर आइडिया वाज राइट कि एक अपने बाबर रखा हुआ है और बाकी सारे हिटर है लाइन से ना. तो आई थिंक पाकिस्तानी टीम भी वो कर सकती है कि थोड़े एग्रेसिव प्लेयर मतलब सिलेक्ट करें. तो उस्मान खान इज एग्रेसिव, फखर इज एग्रेसिव, साइम इज एग्रेसिव. स्पेशली अगर आप देखो हमारी डेप्थ इतनी ज्यादा है, जो हमारी जो टॉप 11 देखो आप, इमाद वसीम तक, उसके बाद शाहीन तक आके हमें पता है शाहीन ने पीएसएल में इतना किया हुआ है. तो ब्रेक लाने की जरूरत है नहीं वैसे. हाँ, मतलब वो होता है कि यार अगर आपके पास अगर चाचा आपके आखिरी 2 ओवर्स में आ रहा हो, तो होता है कि यार मतलब है कि जाया कर दिया ना आपने. पहले मैं कहता था कि चाचा को ऊपर भेजो, मगर अब मैं कहता हूँ चाचा को सही भेजते हैं आखिरी 2 ओवर में. यार वो यार उसको 15 तक लाना चाहिए. अजीब बंदा है यार, वो ऊपर भेजो तो ही डजंट रोटेट. उसको आई थिंक उसको सही किया है, उसको पीछे कर दिया, उससे ऊपर आ गया. स्पिन के अगेंस्ट उसकी स्ट्राइक रेट अच्छी नहीं है. अगर वो आखिरी 5 ओवर में आ जाए जहाँ पे पेसर्स लगे हों और उसको एक हो गया यार तुमने बाउंड्रीज मारनी है, आउट हो गए. स्पिन को वो 6 मार देगा. वो ब्लॉक जब करता है ना स्पिन को, ना वो कट करता है ना वो रन लेता है. या तो छक्का मारता है या वो उसको डेड करता है. तो वो सही नहीं है चाचा का. तो आई थिंक चाचा के साथ सही हो रहा है. उसको आखिरी 3 ओवर ही दो उसको. अच्छा चले एक और फाइनल जो है उसको हम क्लोज करते हैं. एक कंसर्न तो नहीं है, लेकिन वी आर काइंड ऑफ स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस हमारी पावर प्ले के अंदर, राइट. देयर टू मेनी कैंडिडेट. शाहीन तो चलो हमारा है ही है वो तो, बिकॉज हाईएस्ट विकेट टेकर इन द फर्स्ट ओवर. बट उसके अलावा जो है कुछ एक चीज समझ नहीं आ रही, बिकॉज इमाद वसीम भी बड़ी अच्छी करा लेता है. नसीम शाह भी नो स्विंगिंग कंडीशन में बहुत अच्छी करा सकता है. इसके अलावा अगर आप रऊफ को रखते हो तो आई डोंट नो उसके साथ आप जाते हो कि नहीं. नसीम. सो वी हैव अ लॉट ऑफ सॉर्ट ऑफ परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस. और इंटरेस्टिंगली जो अभी न्यूजीलैंड सीरीज हुई थी उसमें जो कपल ऑफ गेम्स दैट वी लॉस्ट, वो हमारा पावर प्ले अच्छा नहीं गया. यू नो उन्होंने इतनी हमारी फेंटी की पावर प्ले के अंदर कि वी वर काइंड ऑफ struggling to come back into the game, and thanks to the spinners in the last game they salvaged the game for us. So ये जो हमारी एक supposedly एक strength होनी चाहिए कि we have a lot of good options, इसको आप किस तरह देखते हो? क्या कोई एक्सपेरिमेंटेशन होनी चाहिए? शाहीन के साथ किस बंदे को आप पेयर अप करना चाहते हो? Would you want to see someone like Saim, for example, being experimented, और इमाद वसीम being experimented, या वही टिपिकल आपका शाहीन आमिर के साथ जाना चाहोगे? यार वो ये भी तुम्हें अगर पहले याद हो ना, पहले हफीज से कराते थे जब हफीज कैप्टन थे. जब पहले सरप्राइज खास तौर पे अगर जो न्यूजीलैंड ये जो इस तरह की टीम है, दे डोंट, एलेक्स हेल्स कोई भी नहीं अच्छा स्पिनर खेलता पावर. ठीक है, हफीज के बाद फिर जब आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, या जब हम नंबर 1 थे, जो सरफराज 12 सीरीज जीता था, उसमें इमाद और आमिर ओपन करते थे यार. ये जो बंद किए ना सिस्टम के, ओपनर के पावर प्ले में स्पिनर बॉल नहीं करेगा, ये बाबर ने शुरू किया. तो आई एम अ बिग फैन ऑफ गिविंग 1 ओवर टू स्टार्ट विद इमाद वसीम. हाँ, इंडिया श्रीलंकन ये डिफरेंट है. आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड, आयरलैंड, साउथ अफ्रीकन, इनको इमाद से आप कराओ. पिट गया तो फिर देन यू कैन ब्रिंग नसीम, आमिर, शाहीन. मगर हम ट्राई नहीं कर रहे स्पिन को यार. जो एक तो
we और have अगर too many पिटाई हो options. जाए तो I फिर agree. बहुत बैकफुट पे आ जाते हैं, राइट? Yeah. जो इमाद को 14 रन पड़ गए थे तो फिर उसको हाँ, बिल्कुल ठीक हटा है। दिया। तो मगर I think they should keep trying it intermittently. Yeah, और बात ये है कि if Imad is in the 11, that's his primary purpose. yeah, वरना उसको जरूरत ही Mid नहीं था. comments. So देखो Yep. पहले over though you have to give to Shaheen because he has that aura about him now. He leads the Right. world in wickets in the first over. I think umpires think that as well. He gets decisions which he probably normally may not get because of Marginal that aura. calls. Yeah. हाँ, तो पहला exactly. So पहला over तो I think you give to Shaheen. I would, based on the opposition, Yeah. most likely give Imad an over as well, and then see how things are going. And then bring Naseem in. If the ball's swinging, it's really Yeah. hard to keep Yes. Naseem out of it. But maybe give Shaheen just one over and then bring Naseem in. Imad should be tried in the power play though. चलें जी, होप के जब आप ये देखें तो कुछ अच्छी न्यूज़ आ गई हो। वी आर होपिंग कि हम क्लीन स्वीप करें। आइडली करना तो चाहिए अगेंस्ट आयरलैंड बिकॉज वी आर गोना मीट देम अगेन ऑन द 16th of June इन फ्लोरिडा। सो नॉट कि ये बहुत ज़्यादा उस तरह ऑन पेपर मैटर करती है सीरीज, बट इन टर्म्स ऑफ दैट साइकोलॉजिकल एडवांटेज उस लिहाज से इम्पोर्टेंट है, एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ the few kind of question marks that we have in the middle order and the death bowling, तो होपफुली उसके भी हमें आंसर्स मिल जाएंगे। आयरलैंड मैंने काफी सीरीज फॉलो की है। आयरलैंड ना अपने मुल्क में इस लाइक अफगानिस्तान। इंग्लैंड की मैंने टॉप टीम ही थी ये मॉर्गन वगैरह, जैसे 3 वनडे खेलने आती थी, आयरलैंड एक हरा देती थी उनको टॉप टीम को। तो आयरलैंड की टीम एक मार सकती है, ये 3-0 इतना आयरलैंड ने, आपको पता है अभी इंडिया के साथ हुआ था उनका, तो एक मैच में वो 2 रन से हारे हैं डकवर्थ लुइस में। अच्छा। वो अपन, हाँ वो खैर डकवर्थ लुइस था। आयरलैंड को आयरलैंड इन आयरलैंड ना दे कैन बीट यू वन, दे कैन विन। अभी उन्होंने अफगानिस्तान को भी 1-2 मैचेस हराए हाँ हैं हाँ, अपने नहीं शारजा में। हारते ये, अपने ही अफगानिस्तान को भी हरा देंगे। और ये यार बांग्लादेश इनकी वही है कि इनकी बैटिंग जब आती है ना, लोअर ऑर्डर कुछ है इनके टक्कर शक्कर, ये ट्रैक्टर बहुत छक्के ट्रैक्टर मारते हैं। वो हाँ, ट्रैक्टर है, एक ट्रैक्टर है, एक टक्कर ट्रैक्टर है, है। आई डोंट नो। फिर वो बुड्ढा उनका चाचा इस वो स्टर्लिंग, Bernie. हाँ वो तो पता नहीं कब से खेल रहे हैं। हाँ, रेड हेड जो है वो तो ये है स्टर्लिंग जिस तरह है। वेस्ट इंडीज नहीं है, वेस्ट इंडीज जब मारने पे आता है तो वो कुछ हाँ भी 200 भी चेज कर सकते हैं, और जब आउट होने पे होता है तो तो 90 पे भी ये ऑल आउट हो सकते हैं। हाँ, तो 3-0 करना चाहिए, मगर डोंट गेट डिसअपॉइंटेड कि अगर वो 2-1 हो, बट हाँ 2-1 हाँ करना This is चाहिए। why I think Abrar को सिर्फ एक मैच में खिलाना चाहिए. You don't हाँ want him to be exposed to him too much because save him if he's effective. Save him for the World Cup encounter. You know. तो इसका मतलब है कि उस एनकाउंटर में आप अबरार को रखोगे तो फिर आपको एक या तो पेसर कम रखना पड़ेगा, या आपको शादाब इमाद में से या किसी इस तरह के हाँ. बंदे को बिठाना पड़ेगा, If which he's is going to be successful against them, वही तो है ना. Abrar is our in and out. Abrar versus Imad in every match, I think. सो होप कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा, थोड़ा सा शॉर्टर एपिसोड एज कम्पेयर टू द अदर वंस। सो इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग पाकिस्तान, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैवंट। पाकिस्तान जिंदाबाद।